In this module, we shall consider an example using the idea of previous theorem. We have Z1, Z2 mod equal to Z1 mod, Z2 mod. Here Z1 and Z2 are two complex numbers, and as we know that the product of two complex numbers, mod of the product of two complex numbers equal to mod of first complex number into mod of second complex number. This means that the absolute value of function is a homomorphism of the group C star of non-zero complex number under multiplication onto the group R plus of positive real numbers under multiplication. Here we are considering the modulus function from C star to R plus. और C स्टार क्योंकि हमें मालूम है कि सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो डोमेन में हमारे पास C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और को डोमेन के अंदर R प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव real numbers under multiplication, and we know that set of all positive real numbers under multiplication also form a group. तो जब आप नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं और नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नॉर्म है वो भी आपको आंसर जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर देगी. तो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हमारे पास Z1, Z2 norm equal to Z1 norm into Z2 norm. So by using this, we can say that our map is a homomorphism from C star to R plus. Since 1 is a subgroup of R plus, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर और ये सब ग्रुप है सिंगलटन 1 R प्लस के अंदर. द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 फॉर्म अ सब ग्रुप U ऑफ C स्टार. तो वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है वो सब ग्रुप बना रहे हैं C स्टार का. क्या रीज़न है इसकी? हमने थ्योरम स्टडी किया था कि अगर G प्राइम, वी हैव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G प्राइम, अगर G प्राइम के अंदर हमारे पास कोई सब ग्रुप है तो उसकी प्री इमेज G के अंदर हमें सब ग्रुप देगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगलटन 1 is the identity element, is the subgroup of R star, और सिंगलटन 1 की जो प्री इमेज है वो G के अंदर हमें सब ग्रुप देगी. सो यू कैन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G which maps on the identity element of G prime are lying in the kernel of the homomorphism. Here in this case we have G equal to C star and G prime equal to R plus, and we are looking all those elements of G which are mapping on the identity element of G prime. In this manner we can say that recall that the complex numbers can be viewed as filling the coordinate plane and that the magnitude of complex number is its distance from the origin. Consequently, the cosets of U are the circles with center at origin, और U जो है वो हमारे पास सब ग्रुप है C स्टार का क्योंकि U प्री इमेज है अंडर दी होमोमॉर्फिज्म 1 की, सिंगलटन 1 की. Consequently, the cosets U are the circle with the center at origin. Each circle is collapsed by this homomorphism onto its point of intersection
with the positive real axis. R प्लस हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस को, और हर क्लास जो है वो इसके पॉजिटिव रियल एक्सिस पे कोलैप्स कर जाएगी, और हर क्लास में हमारे पास एक सर्कल आएगा और वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के किसी नंबर के ऊपर कोलैप्स करेगा. In this manner, we have demonstrated the previous theorem by using this example.